Okay, students. So this is the difference between benzenoids and non-benzenoids. Benzenoids means they aromatic compounds containing benzene ring in them, and the examples are like benzene, benzoic acid, naphthalene, anthracene, etc. We'll see the structures also. Okay. Then non-benzenoids are the aromatic compounds which do not have benzene-like ring into them, but still they show aromatic behavior, like furan, thiophene, pyrrole, pyridine, etc. So these are also aromatic compounds, but they does not contain benzene ring in them. So these are the examples. So these are the examples of benzenoids, that means which contain benzene ring in them. So you can see here, this is the benzene ring and it contains toluene, like CH3 is attached on the benzene ring, it is toluene. Then either it can be ortho, meta or paraxylene, that means in which two methyl groups are attached. So that is known as xylene. So either it can be ortho, meta or para positions. Then we have indene, that means benzene attached to a 5-membered ring. Naphthalene, benzene attached to another benzene ring. Then biphenyl, where two benzene rings are attached with a bond. Then anthracene, where three phenyl groups or three benzene groups are attached together. Phenanthrene, here also three benzene ring, but you can see the position of the third ring is different. So these are all benzenoids. Means they contain benzene ring into them. So they are of course aromatic, but there are certain non-benzenoids which are also aromatic, but they are not having benzene ring. They have 5 or 6 membered rings in which one or the other atom is heterocyclic in nature. Like here, all four are the carbon atoms, but one is oxygen. That is, it's a heterocycle. These are also called heteroaromatic compounds or heterocyclic compounds. Okay, so hetero Q, these are all homo because all are carbon atoms, hydrocarbons, but these are heterocarbons. Okay, heteroaromatic rings because they have in their ring one another element into it. So this is your furan containing one oxygen atom in the 5-membered ring. This is your thiophene containing one sulfur atom in the benzene ring. Then this is your pyrrole containing one nitrogen atom in the 5-membered ring. And this is 6-membered ring but containing one nitrogen atom. Okay, so this is pyridine. So these are the non-benzenoids. So both are aromatic, benzenoids and non-benzenoids, both are aromatic in nature, but you can see the difference between these two. Now, students, we have to study two molecules, one of homocyclic and one of heterocyclic compound in detail. Okay, so we are going to start with the benzene. हमको benzene का सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है, molecular structure, then Kekule's structure, its introduction, its everything we are going to study about this benzene, and one we will study about the heterocyclic compound. So we have to start with the benzene. Okay, so, students, is there any doubt here? Students, do you have any doubt? No. Okay, so I'm proceeding towards benzene. So हमको benzene का सब कुछ यहाँ in detail पढ़ना है. So benzene is a 6-membered cyclic. Actually, whatever I am going to say, it's all the repeated things. So we have already done in the criteria. So in criteria, I have already explained you the 6 main criteria. So the same criteria, in other words, I am going to tell you here. तो आपको यहाँ पे पता है इंट्रोडक्शन ऑफ अगर बेंजीन लिखने आया तो आप क्या लिखेंगे? It's a 6-membered ring. It's a cyclic. It's aromatic. It's a hydrocarbon. This is the structure of benzene. You can see the arrangement of single and double bonds into them. That is, they are alternate arranged. It was first isolated from coal tar by Michael Faraday in 1825. Okay, so this structure was isolated from coal by Michael Faraday. Then the molecular formula of benzene is C6H6 and molecular weight is 78. तो आपका यहाँ पे जो molecular formula है वो कैसे निकालते हैं? कार्बन का atomic weight कितना है? Can anyone tell me? What is the atomic weight of carbon? Yes? Yes, students, tell me atomic weight of carbon.
Hello. Hello, am I audible? 12. Okay. Musab says it's 12. Yes, correct, Musab. 12 is atomic weight of carbon. So how many carbon atoms are present here? 6. So what will be the atomic weight of these 6 carbon atoms? 12 into 6. Okay, that means how much? 12 6 are 22. 72. Yes, 72. Plus, what is the atomic weight of hydrogen? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? जल्दी जल्दी बोलो बेटा, इतना टाइम वेस्ट मत करो. 1. ओके, सो यस करेक्ट साकिब, यस 1. तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 6. सो 6 into 1 is 6. So that means 72 plus 6. That means 78. So molecular weight of this C6H6, that is this benzene ring, 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. C6H6 is 78. Okay, तो ऐसे हम लोग molecular weight निकालते हैं. Then carbon atoms of benzene have a planar hexagonal ring. Okay, so that day we have studied in the criteria that it is having planar structure, that is flat structure, hexagonal ring. Then molecular formula of benzene indicates high degree of unsaturation in the molecule. क्योंकि अगर C6 है तो इसमें अंदर H बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे H6 दिखा रहा है. That means there must be unsaturation in the molecule. So either it can be double bond or triple bond. So here you can see that benzene contains double bonds between the carbon atoms. So molecular formula of benzene indicates that there is this molecule is unsaturated in nature. That means it contains double bond in them. So this is the introduction of benzene. उसके बारे में अगर पूछे तो क्या क्या लिखेंगे आप? उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. वो 6 मेंबर्ड रिंग है, एरोमेटिक है, साइक्लिक है, आपका वो उसके अनसैचुरेटेड है, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, मॉलिक्यूलर वेट 78 है. ओके, कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, benzene is having planar structure, that means flat structure. So all these introduction you will write about the benzene. Okay, now we will move further. एरोमेटिसिटी इन बेंजीन, तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया. एरोमेटिसिटी पढ़ा है ना बेटा? यस Yes, ma'am. हेलो. ओके, नाउ एनीवन कैन टेल मी दैट खान तौसीफ, इलेक्ट्रिकल 5. यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ तौसीफ. Yes, ma'am. हाँ, यस बेटा, टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन. How can you say that benzene is aromatic in nature? Yes. Yes, Tausif. अरे बाबा, सब पढ़ लिया है बेटा. जो हम लोग ने पढ़ा है उसी को आपको रिवाइज बोलना है वापस से. बेंजीन एरोमेटिक कैसे है, क्यों एरोमेटिक है? वो साइक्लिक है ना और फुली कंजुगेटेड है. Yes, it's cyclic in nature. It's fully conjugated. Then और क्या है? All the atom present in the ring must be 6. उसका स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर स्ट्रक्चर है. ओके, साइक्लिक है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, कंजुगेटेड है, और क्या है? हकल्स रूल फॉलो करता है. ओके, व्हाट इज हकल्स रूल? व्हाट इज हकल्स रूल? It should have 4n plus 2 pi electron. Yes, it should have 4n plus 2 pi electrons. तो बेंजीन में कितने pi electrons है? 6. 6. Very good.
ओके, सो वही उसी चीज को जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसी को यहाँ पे लिखना है। अगर आपको पूछते हैं राइट द एरोमेटिसिटी इन बेंजीन, so what you are going to write, you are going to write the same things which we have already studied. क्या आप लिखेंगे इसके अंदर? It has planar molecular structure, okay, that is flat. Then you will write all the pi electrons of benzene can be delocalized. बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स है वो क्या फिक्स्ड है at that position? Yes, is it fixed? No. No. So it can delocalize from one position to another. Okay, so these pi electrons of the benzene molecule are delocalized. Yes, mute करो बेटा, mute करो. फुरकान बेटा, mute yourself. Electrical 6, फुरकान. Yes, ma'am. Yes. Mute करिए. Okay, then next is all 6 carbon atoms of benzene molecule are sp2 hybridized. We will see the structure and I will show you how it is sp2 hybridized. Then all these p orbitals of 6 carbon atoms in benzene are available for delocalization of pi electrons. So just now, as you said, that these double bonds are not fixed at the position of the carbon atoms of benzene. So it can be delocalized from one place to another. At all the 6 carbon atoms, it can move. So this is the benzene ring structure, and you can see that these dumbbell shaped p orbitals. Okay, you have studied SPDF orbitals, na? So these are p orbitals, which are dumbbell shape. So here you can see that all the p orbitals are overlapping with each other at the top also of the benzene ring structure and at the bottom also. Okay, so they are basically forming a ring type of structure, a cloud type of structure at the top and bottom of the benzene ring. Okay, so it obeys Huckel's rule of aromaticity, that is 4n plus 2 pi electron. So you have just now told me that benzene is having 6 pi electrons. That's why it is aromatic in nature. Then it also shows resonance structure and resonance hybrid structure of benzene. So we will see this resonance structure also of benzene. So this is the resonance structure of benzene. Here you can see that the position of double bonds are different, and in the second structure the position of double bonds have been shifted to another place. Okay, so all these double bonds have shifted to another place which was not having double bonds. So at that position it has. So this is the hybrid structure we can say. आप लोग ने 11 12 में जब भी बेंजीन रिंग लिखा होगा तो उसके बीच में आप लोग सर्कल डाल देते हैं ना, सर्कल लिखते हैं ना? Yes, यस, ma'am. हाँ, Yes. तो वो सर्कल क्यों लिखते हैं पता है क्या आपको आज तक कि वो सर्कल क्यों Yes, लिखा ma'am. जाता है बीच में? वो क्यों डबल लिखते हैं बॉन्ड कौन से सर्कल? भी इधर मतलब यस, बिकॉज वो डबल बॉन्ड्स का कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है, इसीलिए ये हम लोग हाइब्रिड फॉर्म में ऐसा सर्कल डालते हैं और डॉटेड लाइन बीच में डालते हैं या फिर सर्कल डालते हैं टू शो दैट these double bonds are delocalized on all the 6 carbon atoms equally. तो इसीलिए ये जो सारे कार्बन एटम्स है बेंजीन के वो सब इक्वल है, किसी को भी हम फर्स्ट कहीं से भी हम काउंट कर सकते हैं अनलेस एंड अंटिल देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग. ओके, जब अगर कोई सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा देन वी कैन से दैट कार्बन इज वन, बट otherwise in benzene ring you can number from anywhere and all the carbon atom are same. Okay, so this you are going to write in the aromaticity in benzene. Why the benzene is aromatic in nature? Because it fulfills all the criteria. कौन सा? It has planar structure, flat structure, then it's cyclic in nature, it is conjugated, it is having single and double bonds in alternate way, and it obeys Huckel's rule, that is it 4n plus 2 rule, and it has 6 pi electrons. Okay, and as it has the pi electrons on them, so there are p orbitals which are available for delocalization of electrons to form the pi electron cloud at top and bottom of the benzene ring. Okay,
तो ये आप फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाएंगे, these two structures and this is the hybrid structure. So that's why benzene is aromatic in nature. Now we will see the Kekule's structure of benzene. So Kekule was a scientist who gave the structure of benzene as mixture of these two this benzene rings. Okay, so here you can also see that the position of double bonds have been shifted in the second diagram. In the first diagram, first structure, you can observe the double bond positions, and in second one also you can observe it's different. Okay, it has been shifted from one place to another. So these are the basically resonance structures. So here this Kekule has given this structure, that's why we call it as the Kekule's structure of benzene. So here 6 carbon atoms of benzene ring are attached to each other by alternate single and double covalent bonds to form a hexagonal ring. तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ये कैसे अरेंज है? They are arranged together with one another with the help of single and double covalent bonds in alternate way. Okay, now each carbon atom of benzene is attached to one hydrogen atom, and this confirms that molecular formula of benzene is C6H6. तो हम लोग बोलते हैं ना and each carbon atom is attached to one hydrogen atom. So H6, C6H6. So this is your Kekule's structure of benzene. Now there are certain drawbacks of this Kekule's structure. Okay, so we are going to see that drawbacks of Kekule's structure. First is difference in alkenes. Okay, as you know that benzene is having double bonds in them. Yes, so it should behave as alkene. Alkenes क्या है? Yes, students, what are alkenes? Double bond. Yes, containing double bond. So this benzene ring is also having double bond. So it should behave as alkene only. So whatever the property alkene is showing, the same property this benzene should also show. But here there are the drawbacks because there is a difference in the alkenes and the benzene, their reactivity. So here we will see that benzene has 3 double bonds. So it should behave as alkene, but it is not showing the properties of alkene. That means alkene undergoes addition reaction basically, not substitution reaction. But here you can observe that benzene shows substitution reaction rather than addition reaction. So this is the difference which comes in alkene. अगर हम उसको डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको एल्कीन समझ सकते हैं, और एल्कीन समझ के हम ये बोल सकते हैं कि उसका भी रिएक्शंस जैसा एल्कीन देता है वैसे बेंजीन भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. ओके, एल्कीन क्या करता है? एडिशन रिएक्शन देता है, लेकिन बेंजीन आपको क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. सो दिस इज द डिफरेंस हैज कम हियर. ओके, देन द सेकंड डिफरेंस इज अबाउट द बॉन्ड लेंथ. ओके, तो बॉन्ड लेंथ आपने बेंजीन रिंग में देखा 3 डबल बॉन्ड्स है, 3 सिंगल बॉन्ड्स है. सिंगल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ अलग होता है, डबल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ अलग होता है. तो हमको बेंजीन में अलग अलग बॉन्ड लेंथ दिखने चाहिए. Okay, but it is not showing different bond lengths. Instead of that, it is showing a single bond length, which is the intermediate of carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bond. Okay, so Kekule's structure predicts 2 type of carbon-carbon bonds in the benzene ring. One is carbon-carbon single bond, जिसका bond length कितना होना चाहिए? 1.54 angstrom should be there. And carbon-carbon double bond. So here the bond length should be 1.34 angstrom. Okay, but the benzene ring does not show these 2 type of bonds. Instead of that, it is showing a single bond of 1.39 angstrom. Okay, so all bonds of equal bond length. तो बेंजीन के अंदर जो हम लोग बॉन्ड्स दिखा रहे हैं दैट इज इक्वल एंड दे शो द बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.39 एंगस्ट्रॉम. तो ये एक डिफरेंस आ गया. जबकि स्ट्रक्चर को देख के आप बोल सकते हैं कि बेंजीन में 2 तरह के बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों का बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए. ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं शो कर रहा है वहां पे, क्योंकि हमने क्या बोला? बेंजीन इज हैविंग ऑल द कार्बन एटम्स एज इक्वल.
सारे कार्बन एटम्स इक्वल है and all the three bonds can relocate from one position to another. Okay, so because of that, all bonds of the benzene ring are of equal bond length of 1.39 angstrom. Is it clear, students? Do you have any doubt? Yes? No, ma'am. Okay. Yes, Osama Ansari, you are entering now in the class. Okay, so this is the structure. Okay, benzene ring का structure जो आपको मैंने अभी बताया, this is the structure of benzene ring where you can see that there is carbon carbon single bond and carbon carbon double bond. दोनों का bond length अलग अलग है, लेकिन benzene में जो bond length है वो 1.39 angstrom का है. Okay, now the third drawback is differences in type of substitution. Okay, so what we used to say that first of all alkene should give addition reaction. Okay, but it is not giving addition, it is giving substitution reaction. But still in substitution reaction there is a difference in the type of substitution reaction. Okay, so according to Kekule's structure, two ortho disubstituted products are possible. ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो वहां पे हमको दो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बट ओनली वन और डाइहेलोबेंजीन इज नोन टिल नाउ. ओके, आज तक हमको दो दिखा ही नहीं, दो two ortho disubstituted products we have not found it out in the substitution reaction of benzene, but instead of that only one ortho dihalobenzene is known, and this is the structure. Okay, so here two ortho positions are there. कौन कौन सा है? एक तो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम्स पे है, ये वाला जो आपका ऑर्थो पोजीशन है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे है, और यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे है. ओके, तो either you can see this one or you can see this one. Is it clear? So these are the drawbacks of the Kekule's structure. उसने पहले उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो एल्कीन बिहेव करना चाहिए था लेकिन नहीं किया. उसने एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए था, नहीं किया. उसने सब्स्टिट्यूशन शो किया, सब्स्टिट्यूशन में भी वो डाई हेलो कंपाउंड से शो किया जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. देन इट हैज शोन डिफरेंट बॉन्ड लेंथ्स, difference in the bond length. So according to the Kekule's structure there should be two types of bond lengths in the benzene ring. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का अलग होना चाहिए था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी अलग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने एक सिंगल बॉन्ड लेंथ शो किया है, that is 1.39, which is the intermediate of 1.34 and 1.54. okay, just now I have already shown you. So resonance theory says that position of double bonds in benzene molecule are not fixed. Okay, position of double bonds in benzene molecule are not fixed. That is, pi electrons associated with the double bonds can be delocalized in the benzene ring. वो एक जगह से दूसरे कार्बन एटम्स पे इजीली मूव कर सकता है, delocalize कर सकता है. Okay, it is not fixed. The double bonds are not fixed at certain particular carbon atom. So these are the resonance structures. You can see benzene shows two resonance forms. You can see here one structure I have shown red arrows, and in the other structure it is green arrows. So here you can see that this double bond can shift from this place to here, this double bond can shift to here, this double bond can shift to here. तो वो आपका शिफ्ट हो गया. उसके बाद अगेन this same bond can shift to this place, this bond can shift to this place, this bond can shift to this place. So these are the two different structures, resonance forms, and this is the hybrid forms. Okay, तो hybrid form में आप देख रहे हैं यहाँ पे either we can write dotted line in the center or we can write a circle at the center of the benzene ring. Okay, so if this dotted line or this circle indicates that these double bonds are not fixed and it can be on any carbon atom, it can be on any carbon atom, it can delocalize from one carbon atom to another carbon atom. So these are the resonance structure of benzene. So according to resonance theory, the structure of benzene can be represented as a resonance hybrid of the Kekule's structure. So always
we prefer to write these kind of structures of benzene, that is hybrid forms, where we don't show the arrow, where we don't show the double bonds. Instead of that, we show the single bonds. Example to show you the resonance structure of substituted benzene ring. Okay, suppose ये benzene ring पे हमने OH लगा दिया, ये आपका phenol बन गया. Okay, so phenol हम लोग कैसे आपका ये resonance show कर रहा है? It has shown from 1 position to 5th 5 different resonance structures. तो benzene आपको सिर्फ 2 show कर रहा है, but if you have any substitution on the benzene ring, then it is showing, see, you can see phenol is showing 5 different resonance structures. So how it is showing, just I wanted to show you, this will not come in your exam, but I wanted to show you with the help of example that what are the resonance structures. So you can see that the two lone pair of electrons on the oxygen atom can move to that bond, and it will form double bond over there, and that double bond which is present on that carbon atom will shift to the next carbon atom. तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इन द सेकेंड केस, और ऊपर आपका डबल बॉन्ड और OH हो जाएगा. अगेन दिस इलेक्ट्रॉन, so in the third structure you can see the double bond has shifted here and the electron is shifted to the para position. Again these electrons can shift from here to here and the bond can shift to the next carbon atom. So there electrons will be there and the bond will be formed in the next. And at the last, again this electron can shift to its place and this bond will go to the oxygen atom. Okay, as a electron. So यहाँ पे वापस आपका lone pair of electrons आ गया और ये आपका bond. So you can observe that in the first position, first diagram and the last 5th diagram, there is change in the position of the double bonds. Okay, पहले वाले में देखो double bond का positions अलग है और वो घूम घूम के पूरा rotate होके आपका 5th position में आपका फिर से वो पूरा change हो गया है. Okay, any doubt students here? Any doubt? Yes? If no doubt, then we can proceed further. So students, do you have any doubt? You can ask in between. No, ma'am. Okay. So one of your representative has said that there is no doubt. So I hope that others are also not having any doubt if you are not speaking by yourself. So your representative has told that you people don't have any doubt. Okay, so we will proceed further. Just a minute, it is not. Yes. Now we will, the resonance structure, what we have seen, we have to show the evidence of that. कि वो कैसे आपका resonance आ रहा है, उसका आप evidence बताओ, सबूत बताओ. Evidence is nothing but सबूत. तो यहाँ पे हम लोग वो evidences देंगे जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि resonance structures benzene show करता है. Okay, तो वो क्या evidences है, that we will see here. First is a carbon-carbon bond length. Okay, अगर वो resonance structure show नहीं करता तो bond length अलग अलग टाइप का होता. Okay, आपका 1.54 and 1.34 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए था. सिंगल का 1.54 and double bonds का 1.34, but it is not showing like that. It is showing a single bond length of 1.39 angstrom. So this is one evidence which was done on X-ray diffraction analysis, and based on that it was shown that benzene have same bond length of 1.397 angstrom. Okay, it is not showing separate bond length of carbon-carbon single bond and double bond. It is showing a single bond length. So that shows that वो resonance structure है, तभी ये आपको single bond दिखा रहा है. अगर resonance structure नहीं होता, fixed positions पे carbon होता, तो bond length भी उनका fixed होता, अलग अलग. Okay, so this X-ray diffraction have same bond length of 1.39 angstrom. दोनों अलग अलग नहीं है. And therefore all the carbon-carbon bonds of benzene have a partial double bond nature. जो आपने hybrid में दिखाया है, dotted line, partial double bonds on all the carbon atoms. So all the 6 pi electrons
of benzene are delocalized, that is position of बताने के लिए कि बेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है. ओके दूसरा क्या है, अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन. ये हम लोग ने बताया कि बेंजीन शोज स्टेबिलिटी, अनयूजुअल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब एल्कीन्स आर नॉट वेरी स्टेबल बट बेंजीन इज स्टेबल. ओके तो ये अनयूजुअल स्टेबिलिटी बेंजीन की क्यों है? व्हाई देयर इज अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन? So this actual molecule of benzene is found to be more stable than the calculase structure, and it was shown again by doing the heat of hydrogenation calculation reactions. ओके तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाला उन्होंने, अलग अलग साइक्लोहेक्सेन लेके, साइक्लो मैंने आगे लिया है वो, बट दैट कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल बेसिकली. ओके तो हियर दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोहेक्सेन एक डबल बॉन्ड डाला, फिर दूसरा दो डबल बॉन्ड डाला, एंड देन वी हैव बेंजीन व्हिच इज हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स. ओके तो यूजुअली उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन के बीच में -118 होना चाहिए, 3 साइक्लोहेक्सेन के बीच में -230 होना चाहिए, और बेंजीन के बीच में -356 होना चाहिए. ओके but it is not showing that much. This is showing actual, this was the expected, इतना होना चाहिए difference, but it is showing only -206 kilojoule per mole of actual heat of hydrogenation. So because of this they can say, you can say that this benzene shows resonance structures. This is not that much important for you. Okay, next is molecular orbital of benzene. मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, अभी आपने क्या देखा, केकुलिस स्ट्रक्चर देखा, उसका ड्रॉबैक देखा, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, उसका सबका एविडेंस देखा कि रेजोनेंस अगर दे रहा है तो कैसे दे रहा है, उसका एविडेंस बताया हमने. नाउ वी आर गोइंग टू सी द मॉलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ओके तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसा रहेगा? दिस इज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन. So here you can see that all the carbon atoms are having p orbitals on them. मैंने आपको उसी दिन बताया था in the first lecture that p orbitals are dumbbell shape, and because of the presence of pi electrons on each carbon it shows p orbital. Okay so these p orbitals are dumbbell shape and it is on all the 6 carbon atoms. And here you can see that this carbon, if you consider any carbon atom in the benzene ring, it forms 3 sigma bonds. Okay कहाँ कहाँ 3 sigma bond शो कर रहा है? एक with the 2 with the adjacent carbon atoms. ये अगर carbon atom आप consider करो, so this carbon atom is forming a sigma bond with this carbon atom and with this carbon atom. Okay and with one hydrogen atom. जो हाइड्रोजन के साथ बन रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और एक आपका कहीं पे भी या तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा या यहाँ डबल बॉन्ड होगा. सो बेस्ड ऑन दैट इट फॉर्म्स वन पाई बॉन्ड. ओके सो these p orbitals, these p pi electrons, they overlap each other to form the pi orbital. So 3 sigma bonds and 1 pi bond. So here I've written that all 6 carbon atoms of benzene are sp2 hybridized. कैसे sp2 hybridized है? यहाँ पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है दैट इज s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन शोज s ऑर्बिटल. बाकी जो आपका ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, दे आर फॉर्मिंग p ऑर्बिटल्स. वो p ऑर्बिटल से बन रहा है क्योंकि हमारे पास हर कार्बन एटम्स के पास p ऑर्बिटल है. ओके तो ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके बना रहा है, ये p ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके बना रहा है. So and only with the hydrogen it is forming s sigma s orbital. So s and p2, okay, with the 2 adjacent carbon atoms, sp2 hybridized and forms 3 sigma bonds and 1 pi bond. So each carbon atom of benzene forms 2 sigma bonds with 2 adjacent carbon atoms. अब ये जो 3 sigma bond बना है वो कहाँ बन रहा है? 2 with the adjacent carbon atoms and 1 with the hydrogen atom. Yes, very good. 1 with hydrogen atom. So these are the 3 sigma bonds. Pi bond कहाँ पे रहेगा? Either of the 2 carbon atoms. जहाँ पे double bond रहेगा वहाँ पे आपका एक pi bond बनेगा. So all 6 carbon atoms of 6 and 6 hydrogen atoms of benzene lie in the same place.
we have seen that this benzene have this planar structure, that is flat structure. And why it has the flat structure? Because all the bonds between the carbon atoms are 120 degree. Okay, you can see here the external bond angle also as well as the internal bond angle also. All the bond angles are 120 degree. So because of that, it is having planar structure. Okay. So this is a molecular orbital of benzene. So the angle between two adjacent bonds is 120 degree. So either it is external or internal. आप दोनों देखोगे सब 120 है और सब 120 है तभी आपका वो फ्लैट स्ट्रक्चर, तभी आप उसको टेबल पे रख सकते हैं. अगर वो अलग अलग बॉन्ड्स होता है, एक 90 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 30 डिग्री, so you might not have put on the floor. So it not have much shown you the planar structure, but now here it is showing the planar structure because of the all bonds formed between the carbon and between the carbon hydrogen are 120 degree. Okay, any doubt students still here? Yes beta, yes Humaira. No, sir. No, ma'am. Okay, okay, किसी को डाउट नहीं? Good. Okay, so we will proceed further. Molecular orbital structure of benzene we will see in more explained way form. Now here each carbon atom of benzene has unhybridized p orbital. Pi orbital we have said, that is pz orbital. So this is the structure of benzene, and all the benzene rings have p orbital on them. That is, it is pi orbital, and it forms overlapping of pi orbital with each other on the adjacent carbon atoms to form the pi bond. Okay, so here you can see that these are the, this is basically your benzene ring, and the pi orbitals can be formed by this way or by this way. Okay, so here the again as the bonding will take place, the position of the carbon carbon double bond will be different. अगर इस वे से बन रहा है तो आपका पोजीशन आपका क्या रहेगा यहाँ पे? This will be the position of the carbon carbon double bonds, but in this way it will be like this. Okay, so it lies above and under the plane of benzene ring. So an electron cloud will be formed at the top and bottom of the benzene ring. So these pi orbitals of all the 6 carbon atoms, they overlap sidewise above and below the plane to form two sets of pi electron clouds, one at the top and one at the bottom. So these pi electrons of pz orbital are delocalized and they can move from all over the 6 carbon atoms of benzene. Okay, so as we have already saying this, that from the first lecture onwards, that these pi electrons of this benzene ring are not fixed. Pi orbitals are not fixed, and they can be delocalized from one carbon atom to another carbon atom. So such delocalization of pi electron constitutes what? Constitutes ring-like electron clouds like this. So this is the structure where I have shown you the ring-like structure electron cloud at the top and at the bottom of the benzene ring. Okay, तो ऊपर वाला देखो मैंने green color में show किया है, नीचे blue color में. Okay, just to distinguish, it's not like this actually. Just to distinguish, I have taken different colors so that to show that on top and bottom, you can see the electron clouds prominently. So here at the top, you can see these 6 pi electrons of the benzene ring, green color. It is forming an electron cloud at the top of the benzene ring. And this blue color, you can see that it is forming an electron cloud at the bottom of the benzene ring. Is it clear, students? Are you getting? Yes, ma'am. Okay. So this is the final molecular structure of benzene, where I have shown that what are the different bond angles, what are the different bond lengths in the benzene ring. So here you can see that external carbon-carbon bond and this
internal carbon-carbon bond, they are of 120 degree. And as we have already explained, we have seen that all these bonds of benzene are of equal length, that is 1.39 angstrom. तो ये सारे bond length जो है वो आपका benzene ring के अंदर का वो 1.39 है, and carbon hydrogen bond length is 1.09 angstrom. Okay, so if you want to show this bond angle, bond length, you can show in this way by writing the benzene ring. So this is the electron cloud. यहाँ देखो अंदर का कार्बन कार्बन बॉन्ड 120, बाहर आपका हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड it is also 120, and all the benzene rings are they are having 1.397 angstrom, and this carbon hydrogen is 1.09 angstrom. And in this way there will be at the top and bottom there will be electron clouds which will be rotating. So that means these electrons, they rotate from one carbon atom to the another carbon atom, that is from first to sixth. So this is this type of electron clouds which is shown at the benzene carbons है, और ये जो white है that is your hydrogen atoms attached to the all carbon atoms, 6 carbon atoms. And this is top, at the top you can see this disc, blue color disc, that is the electron cloud, and at the bottom also we have a blue color disc, that is the electron cloud. Okay, so again here we have to show some evidences of molecular structure of benzene. Yes students, do you have any doubt? You can ask, so that that I can tell you again, or if you have any doubt I can explain again. जब तक आप सोचो क्या डाउट है, till that I will drink water. कुछ है डाउट? Yes, no doubt students. Do you want to ask anything? No. Okay, then we will see the evidences for molecular structure of benzene. So whatever the molecular structure just now I have explained you, we have to see what are the evidences for that. मतलब उसके लिए भी क्या सबूत है, आप क्या सबूत बता सकते हो कि वो molecular structure show करता है. Okay, so these are the evidences. First, it shows unusual stability, which we are talking from the first lecture, that benzene shows unusual stability. So why this shows unusual stability? It reacts very slowly with the bromine to give bromobenzene. Bromine replaces hydrogen. So this is basically a substitution reaction rather than addition reaction. अगर addition reaction होता तो क्या होता? दोनों bromine आपका attach हो जाता double bonds को. Okay, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही bromine attach होता है, एक hydrogen replace होता है. So that means it shows that it is having it is not behaving like alkene, and it is behaving very stability. It has very highly stable compound. So this is the reaction I have shown you. This is the benzene, and it gives substitution reaction with bromine. In presence of this iron catalyst, it forms bromobenzene. One hydrogen from this place is replaced by the bromine, and this hydrogen goes with the other bromine. अगर वो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता तो आपका ऐसा बनता. अगर वो एल्कीन होता, ठीक है, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर भी डबल बॉन्ड्स है, एल्कीन के अंदर भी डबल बॉन्ड है, तो अगर वो एल्कीन बिहेव करता तो आपका एडिशन प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म होता, डाइब्रोमो. Okay, but it is not showing these kind of product. It is not formed. You can see here it is written at the bottom, this product is not formed. Instead of that, this bromobenzene substitution product is formed. Okay. Then another evidence is electrophilic substitution reaction.
So this benzene also leads to electrophilic substitution reaction here. So as it contains the pi electron clouds at the top and bottom of the plane, so it can be easily attacked by any electrophile. Hence, it readily undergoes electrophilic substitution reactions. So, and electrophilic substitution reaction of benzene is what? It is one where an electrophile substitutes the hydrogen atom of benzene. इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो आपका ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एट द टॉप और बॉटम, दे आर गोइंग टू अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल विल गेट अटैच्ड टू दिस carbon atom and hydrogen will be replaced. So hydrogen will go out as H plus ions. Okay. So this is one evidence to show that it contains molecular structure. Now we will see molecular orbital description of benzene. Okay, so here you can see in this diagram, diagram you will find little difficult or complicated, but it's not very complicated, it's very simple. So here you can see this is the energy level I have shown, and here this is your benzene ring, simple benzene ring having all the 6 carbon atoms containing p orbital at top and bottom. Okay, and here this is the dotted line which divides the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals of benzene. So these 6 pi electrons which are present at the on this pi electrons, these 6 pi electrons which are there in the benzene, so they are going to form bonding molecular orbitals, not the anti-bonding molecular orbitals. पहले कभी भी lower energy level fill होता है, then the higher energy level. So bonding molecular orbitals are always at lower energy level than anti-bonding energy molecular orbitals. So you can see that in the diagram, the green line divides the bonding and anti-bonding molecular orbitals. नीचे वाले जो है वो सब bonding molecular orbital है और green line के ऊपर जो है वो सब anti-bonding molecular orbital है. Okay, so जो आप हमारे पास 6 pi electrons है, you can see that in green arrows you can see here that 2 pi electrons are here, 2 pi electrons are here, and 2 pi electrons are with pi 3, pi 1, pi 2 and pi 3 I have written here. So 2 electrons pi 1 के पास है, 2 electrons pi 2 के पास है और 2 electrons pi 3 के पास है. And whatever you are seeing the positive and negative, that is all the arrangement of the p orbitals. Okay, कैसे बॉन्डिंग में हम लोग सब कैसे पॉजिटिव एक तरफ हो जाता है और नेगेटिव एक तरफ, तो इसी तरह it is random arrangement or there might be some negative positive that kind of arrangement. But in bonding molecular orbitals, all positive will be together, all negative will be together. Okay, so this structure shows that there are 6 orbitals, 3 anti-bonding and 3 bonding molecular orbitals. So all the 6 pi electrons of benzene will be first filled in bonding molecular orbital because it is having lower energy as compared to the anti-bonding molecular orbitals. Is it clear, students? Yes? Please respond fast. Hello? Hello, am I audible? Okay, you have written yes for audible or you are saying any doubt you have? Yes. Yes. You have doubt? Both. So tell me, Furkan, what is your doubt? Yes, unmute yourself, Furkan. Just now you said both, na? Yes, for both the questions. For doubt also yes, and for I'm audible also you said yes. And now you are saying you don't have any doubt. Other students, have you understood? अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तो ऐसे भागने वाली हूँ क्योंकि मुझे पोर्शन कंप्लीट करना है. मैं और तेज भगा सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ है डाउट तो आप पूछो. आपको क्लास टीचर ने बताया कि अभी हमारा स्टडी ये एकेडमिक कैलेंडर चेंज हो रहा है. योर बोर्ड एग्जाम विल बी फ्रॉम 25th of February. Yes? Yes, ma'am.
हाँ, तो सोचो अभी कितना टाइम बचा है. टुडे इज 7th Jan and from 25th Jan you have your board exams and from 23rd you have your oral practical exams and before that we have to wind up. Okay, तो हमको उससे पहले हमको wind up करना है. So I have to very little bit fast and you also have to be fast. You have to also understand in a better way and in fast also. Okay, तो हम दोनों का अगर पेज सेम रहेगा then only we can get success. नहीं तो मैं इधर भगाती रहूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है. तो इसीलिए पूछ रही हूँ, अगर आप सामने होते क्लास में तो हम आपको देख के आपके फेस रीडिंग से हम पहचान सकते थे कि इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है. लेकिन अभी ऐसा नहीं है बेटा. आपके एक तो सबके वीडियोस ऑफ है. मेरा ऑफ है क्या? हाँ, मेरा ऑफ है क्या वीडियो? नो मैम. तो आप मेरे फेस से समझ में आ रहा है कि मेरे फेस से आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? व्हाट क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो जैसे मेरे फेस को आपको देख के समझ में आ रहा है कि मैं आपको कॉन्फिडेंट एंड आई एम you can read my face expression. Similarly, if your videos will be on, then also I will be able to find out that whether you are getting or not. Okay, ठीक है. किसी किसी का नेटवर्क इश्यूज है, वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपने ऑफ कर रखा है, इट्स ओके. लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप अपना वीडियो या ऑडियो ऑन करके आप पूछ सकते हो. ओके, आप सामने नहीं है कि मैं आपका फेस रीडिंग करके बता सकूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया है. ओके, अगर आप नहीं बताओगे देन आई विल प्रोसीड फर्दर. Okay, so this is the arrangement of 6p orbitals to form the 6 orbitals, 3 sigma bonding and 3 bonding and 3 anti-bonding. Okay, so 3 bonding orbitals with 6 pi electrons are filled. आप वहां पे देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, which are not having any electrons. X4 star, Y pi 4 star, pi 5 star and pi 6 star. क्या हम लोग बॉन्डिंग को सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3, और एंटी बॉन्डिंग को स्टार मार्क के साथ लिखते हैं. ओके, ऑलवेज. तो एंटी बॉन्डिंग में आप देख रहे हो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और बॉन्डिंग में आपका इलेक्ट्रॉन्स है. So orbitals with same energy are known as degenerate orbitals. Okay, so now we will summarize the benzene. हमारा बेंजीन हो गया, तो हम लोग इसको समराइज करते हैं. बेंजीन का क्या क्या हम लोग ने पढ़ा, उसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका एरोमेटिसिटी पढ़ा, उसका हम लोग ने ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, केकुलेस स्ट्रक्चर पढ़ा, ड्रॉबैक्स ऑफ केकुलेस पढ़ा. ओके, एविडेंसेस पढ़ा. So this is just I am summarizing the benzene because we have finished with the benzene. So benzene में हम लोग ने क्या क्या देखा? It is cyclic, it is aromatic, it is having conjugated double and single bonds. It has 6 pi electrons that it follows Huckel's rule, that is 4n plus 2 pi electrons. All the bond angles of the benzene ring are of equal length 1.39 angstrom and carbon hydrogen bond length is 1.09 angstrom. All the bond angles external as well as internal are 120 degree. Okay, so this is a summarization of the benzene ring. So it shows unusual stability because of the heat of hydrogenation. It has planar structure because all bond angles are 120. Carbon-carbon bond length equal 1.39 angstrom or 139 picometer. Then it undergoes substitution rather than electrophilic addition reaction because it is not a alkene. Okay, it is something different and therefore it shows substitution reaction. It also shows resonance hybrid structure between the two line bonded structures. Okay, so this is all about your benzene. So these all qualities are for all aromatic compounds. It is not for only one benzene. So whatever the aromatic compounds will be given to you for study, you can have the same analysis of
Okay, so this was the summary of benzene, and this summary is for all type of aromatic compounds, not only the benzene. Now we will see aromatic heterocycles. Okay, जो आपको मैंने बताया ना non-benzenoids, so they are also organic compound, but they have one heteroatom into them in their ring structure. Okay, so this is your aromatic heterocycles. So here we have heterocyclic compound, that is non-benzenoids. It contain other elements other than carbon in the ring, such as oxygen, sulfur, nitrogen, phosphorus, etc. Okay. So aromatic compounds can have similar have elements other than carbon in the ring. So thiophene contains sulfur, pyrrole contains nitrogen, pyridine also contains nitrogen. Okay, so these are the aromatic heterocyclic aromatic compounds, or you can say non-benzenoids. So there are many heterocyclic compounds and many are very common also. These are very common compounds which are aromatic in nature. So cyclic compounds that contain only carbon are called carbocycles or homocycles. जैसे हम इसको heterocycles बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक hetero atom present है. Similarly, when all the carbon atoms are, all the elements are carbon atoms like in benzene, then in that case we call it as homocycles or carbocycles. सिर्फ carbon present है, so carbocycles. Okay, or all the elements are same, so that means homo. Homo means same, hetero means different. So homocycles में सारे आपके जो 6 एटम्स है वो सेम रहेगा. यहाँ पे आपका या 5 एटम्स है वो सेम रहेगा. यहाँ पे हेट्रो में अलग कोई एक अलग कार्बन एटम रहेगा, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. So these are heterocyclic compounds. So out of these heterocyclic compounds we are going to study pyrrole in detail. ओके जैसे हम लोग ने बेंजीन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़ा, कैलकुलेस स्ट्रक्चर, उसका ड्रॉबैक पढ़ा. देन वी आल्सो स्टडीड इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वी स्टडीड इट्स molecular structure. Similarly, for pyrrole also we have to do all these type of structures. First we will see introduction, then its molecular orbital structure and its resonance structure, all that we are going to see. Okay, so this is the structure of pyrrole. You can see here there are 4 carbon atoms and 5th one is nitrogen atom. It's a 5-membered ring. So is it cyclic? Yes, students, tell me the answer. Is it cyclic? Yes, ma'am. Yes. Is it planar? Is it planar? Yes. Yes. Sarim is saying yes, it is planar. Okay. Then do they have conjugated single and double bonds in them? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, they have conjugated. And here on nitrogen atom, it does not have double bond, but instead of that, it has lone pair of electrons, which can be used for delocalization. And because of that, it shows resonance structure. And because of that, it is highly stable. Okay. So these are the pi, where there are double bonds, they have pi electrons on them. Okay. So here, do this structure follow 4n+2 rule, that is Huckel's rule? How many pi electrons are present? Yes, students. How many pi electrons are present? अच्छा, आपको नाइट्रोजन का डाउट हो रहा है तो आप सिंपल बताओ, आपको डबल बॉन्ड के हिसाब से कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? हाँ, 2 किधर है बेटा? कितने डबल बॉन्ड्स है? 2. तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पाई बॉन्ड्स कितने होते हैं इसमें? एक डबल बॉन्ड में कितना सिंगल और कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है? अभी बताया था ना स्टार्टिंग में.
Remember the first lecture where you have determined sigma and pi bonds of different structures. So tell me here, how many sigma and how many pi bonds are present? थ्री पाई बॉन्ड्स किधर दिख रहा है? थ्री पाई बॉन्ड्स अगर आप नाइट्रोजन का लोन पेयर कंसिडर कर रहे हो तो, लेकिन सबको नहीं पता कि वो लोन पेयर भी आपका पाई बॉन्ड फॉर्म करता है. ओके, yes, for one double bond there is one pi bond and one sigma bond. So here there are, in this structure there are two pi bonds. So two pi bonds means there are two pi bonds and sigma bonds. तो यहाँ पे बहुत सारे हैं. कितने हैं sigma bonds? 10 sigma bonds. Okay, now this nitrogen, lone pair of nitrogen, it helps in resonance formation. So because of the resonance structure, it is highly stable and delocalization of electrons can take place from one atom to another atom, from nitrogen to carbon. Okay, so here you can see that a 5-membered unsaturated heterocyclic compound with one nitrogen atom. This is the pyrrole. It has 4 carbon and 1 nitrogen atom in the ring. This is just introduction I am saying. Okay, then there are 2 double bonds between 4 carbon atoms. 2 double bonds hai. Nitrogen has a lone pair of electron which participates in delocalization, that is resonance. Since lone pair of electrons are in the aromatic ring, protonation destroys aromaticity, making pyrrole a very weak base. So because of this lone pair of electron, it is a weak base. Okay, so here this is about the जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पायरोल. क्या है वो? 5-membered रिंग है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, it contains 4 carbon atoms and 1 nitrogen atom. 2 double bonds are there. Nitrogen have lone pair which helps in the delocalization and to form the resonance structures. Okay, this is the general introduction of pyrrole. So because of that it shows aromatic character. The molecular formula is C4H5N. तो अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कैसे? अभी हमने C6H6 का निकाला था, वैसे ही इसका भी निकालना है. 12 into 4 plus 5 plus nitrogen 14. Okay, so total it comes to how much? 12 for the 12 for the okay, plus 14 plus 14 62 and yes, and plus 5 67 67. Yes, so molecular weight of this pyrrole is 67. It comes to 67. This is the general introduction. Now we will see the structure and aromaticity of pyrrole. Why pyrrole is aromatic in nature? Okay, and its structure. So pyrrole is a cyclic, it's a amine. जिसमें भी कंपाउंड में नाइट्रोजन रहता है हम लोग उसको amine बोलते हैं. Okay, so pyrrole is a cyclic amine with a conjugated diene system. डबल बॉन्ड है ना, 2 alternate position पे, तो diene system है और alternate positions पे डबल बॉन्ड है. Then about its chemical behavior, it possesses high degree of aromaticity and it undergoes, जो aromatic compounds होता है वो किस टाइप का reaction देता है? Substitution reaction, electrophilic substitution reaction. So chemical behavior में आप ये लिखेंगे, it possesses high degree of aromaticity and it undergoes electrophilic substitution reaction. Then nitrogen atom, which is present at the 5th place, that is pyrrole, it contains a lone pair of electron which gets involved in the 4 pi electrons of the ring. जो ring में हमारा 4 pi electrons है डबल बॉन्ड के पास, उसके साथ ये 2 lone pairs of electrons आपका मिलके वो resonance structure form करता है, resonance effect देता है, and because of that it is stable. So total number of delocalized electrons in pyrrole molecule is now 6. So is it the magic number? Yes. Is it the magic number? Yes. So this is the magic number. So that means it follows Huckel's rule and the number of pi electrons are 6 here.
4 आपका 2 डबल बॉन्ड से आ गया और ये 2 आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आ गया। ये 2 लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज इट हेल्प्स इन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव द एरोमेटिसिटी टू द pyrrole ring. So this is the structure here. You can see students, this is the nitrogen. हम लोग यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, जहाँ पे भी हेटेरो एटम है वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं. So 1 2 3 like this, and you can see that each carbon atom as well as nitrogen atom, they have low pi orbitals on them. Each carbon atom as well as nitrogen atom have pi orbital on them or p orbital on them, or you can say pi orbital, p orbital or pi orbital. So here nitrogen, they have lone pair of electrons, rest all carbon atoms shows p orbital. Okay, so in this way also, as we have seen in the benzene ring, here also we can see the delocalization of these 2 electrons on the nitrogen atom can move from one place to another to the carbon atoms to form the resonance structure. So this is the delocalized lone pair of electron. So this is here also, as we have seen there, that there is a electron cloud at the top of benzene ring and at the bottom of the benzene ring. Similarly, here also in the pyrrole pi system, you can see that as these are the pi orbitals, and all these pi orbitals, they overlap sideways to form the bonds, single and double bond on the pyrrole. So based on that, you can see here that these are the 5 black carbon atoms, and the white color balls, they are the oxygen atom. And at the top of the ring, you can see the blue color disk, that is the pi electron cloud at the top and at the bottom of the pyrrole ring. Same वैसा ही है. So all 4 carbon atoms of pyrrole ring are sp2 hybridized again here, because if you consider any of the carbon atom in the benzene ring, that is forming 3 sigma bonds, 2 with the 2 adjacent carbon atoms, 1 with hydrogen atom and 1 p orbital. Okay, so 1 pi orbit, 3 sigma bonds and 1 pi bond. मैम नाइट्रोजन का sp3 होगा? Nitrogen ka, yes, nitrogen is sp3, yes. Carbons are sp2. So the p orbitals of 4 sp2 hybridized carbon atoms and an orbital of n atom form a pi electron cloud at top and bottom of the pyrrole ring. Okay, so these electron clouds are above and below the plane of the ring. And the pyrrole ring is again planar, pentagonal structure. It is cyclic. Okay, all that will be considered same. Cyclic है, आपका planar structure है, और आपका ये pentagon है containing 1 nitrogen atom, and it is a flat structure having flat planar structure, that means flat structure, possess 6 electrons. So 4n plus 2 is satisfied, Huckel's rule is satisfied. So because of all these criteria, it is also aromatic in nature. And because of the lone pair of electrons on the nitrogen, the delocalization can take place and resonance structures can be formed. So this is the aromatic heterocyclic pyrrole molecule. Okay, अब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. In terms of valence bond description, the pyrrole molecule shows resonance hybrid of the following structures. So here you can see this is the nitrogen atom containing 2 lone pair of electrons. Red color I have shown here, and these 2 lone pair of electrons can shift to this bond, and this double bond, red color double bond, can shift to this carbon atom. So at this position, carbon atom position, negative electron will be there, negative charge, and this nitrogen will have positive charge. Again, this negative charge will shift to this place, and double bond will shift to this carbon atom. So here at this position there will be negative charge, and here the bond will be formed. Okay. Similarly, this electron negative charge can shift to the next nitrogen, and this bond can shift to this carbon atom. So this will nitrogen plus, and here the carbon will become negatively charged. Again, this
So in this way, this can again shift to this place. So this will rotate continuously. So delocalization of the electrons will take place. अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो आपका ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहता. ओके, क्यों? क्योंकि वो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड शो नहीं करता, या फिर आपका पाई 4n+2 pi electrons will that is your Huckel's rule would not have been satisfied here. Okay, so all these are satisfied. That's why it is forming, it is showing the aromaticity, and especially due to the resonance in case of pyrrole. So this was the resonance structure. फिर हमारे एरोमेटिक आयंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल ही हो, हमारे आयंस भी एरोमेटिक हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको एक आयंस बताया था, which ion I have already told you. Yes students, which ion we have studied as the aromatic ion? Nobody remembers? Hello? Yes, बोलो बेटा. Sarim, Sarim, unmute yourself. Yes Sarim. आप लोग क्या खाना खा के सिर्फ इसको लगा के सो गए हो क्या? हाँ, सिर्फ ज्वाइन कर लिया और ऑडियो वीडियो सब म्यूट कर देने का और सो जाने का, ऐसा है क्या? कौन जगा हुआ है? Yes, ma'am. जगा हुआ कौन है वो बताओ? सब जगह है? हाँ, यस मैम. सब जगह. चलो ठीक है. इसीलिए मैंने बोला, देखो मेरा फेस आपको दिख रहा है ना वीडियो, इसलिए मैंने वीडियो ऑन करके रखा है. मैं भी खाना खा के बैठी हूँ, आप भी खाना खा के बैठे हो, तो मैं स्लीपी दिख रही हूँ क्या? फिर आप स्लीपी क्यों है? हाँ, चलो वीडियो ऑन करो, मैं देखती हूँ सबका फेस. कौन स्लीपी है, कौन क्या कर रहा है? वीडियो ऑन करो. अच्छा बताओ, कौन सा आयंस पढ़ा था हमने, एरोमेटिक आयन? जल्दी बताओ, चैप्टर खत्म करना है अभी, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा. नहीं याद है? साइक्लोपेंटिनाइल कैटायन पढ़ा था ना? हाँ या ना, इतना तो बोलो. हेलो? हाँ हाँ, तो हमने बहुत सारे आयंस, एक आयन पढ़ा था जो आपका एरोमेटिक था, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन. Okay, that we have seen with the help of resonance also that. अरे स्पीकर क्या जोर से बोलूं? जय माता दी. किसको बोल रहे हो बेटा? Please mute yourself. So the 4n+2 rule applies to ions as well as neutral species. So neutral species we have seen, and the same rules can also be applied to ions also. Okay, so aromatic ions can also be aromatic in nature with the help of resonance structure. So both the cyclopentadienyl anion and cycloheptatrienyl anion cation are aromatic in nature. Okay, we will see the structures here. ये देखो, हमने कौन सा किया था? साइक्लोपेंटिनाइल कैटायन किया था. उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था और उसका आपको रेजोनेंस भी बताया था. दिस इज cyclopentyl pentadienyl anion, the first one, and second one is cycloheptatrienyl cation. पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कैटायन, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसलिए एनायन. ओके, ये पेंटा 5 कार्बन एटम्स है, ये हेप्टा 7 कार्बन एटम्स है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है इसलिए डाई इनाइल, और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स है इसलिए ट्राई इनाइल. ओके, नॉमेनक्लेचर आता है ना? यस स्टूडेंट्स? यस मिस.
So I am considering that you know the nomenclature of simple compounds. तो ये नाम कोई difficult नहीं है फिर यहाँ पे. So the key feature of both is that they contain 6 pi electrons in the ring and ring of continuous p orbitals. So यहाँ पे भी आपका 6 अभी हम लोग ने ये पढ़ा ना, ये वाला सिर्फ यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज मैजिक रूल इज सेटिस्फाइड. जो आपका Huckel's rule है वो satisfied है, 4n plus 2 pi electrons. Similarly here also you can see there are 3 double bonds. So 3 double bond means there are 6 pi electrons. So here also the Huckel's rule is satisfied, that is 4n plus 2 pi electrons. So that means there in both the structures magic numbers are there, that is 6 pi electrons are there. So it is aromatic in nature. So some ions are also aromatic in nature, not only the neutral species. So in detail we will see this cyclopentadienyl anion. See देखो कैसे रेजोनेंस आपका बनता है. This is the cyclopentadiene. ठीक है, अगर ये आप सिर्फ लेते हो so it is not aromatic in nature because 4n plus 2 rule is not satisfied here. सिर्फ 4 है, pi electrons are 4 which is not a magic number. Okay, you know what are the magic numbers. So here उसमें से एक हाइड्रोजन आयन निकाला तो आपका ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटायन. लेकिन इसमें भी आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4 है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर. दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो आपका क्या बन गया, रेडिकल. सो रेडिकल इज ऑल्सो हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स. 5 इज नॉट अ मैजिक नंबर, so it is also a non-aromatic compound. But in case of here you can see cyclopentadienyl anion, there are 6 pi electrons. दो तो ये 4 तो ये 2 डबल बॉन्ड से आ गया और ये आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो. So it's a magic number, it is following Huckel's rule, therefore it is aromatic in nature. तो आपका ये बाकी के दो नहीं है, लेकिन थर्ड वन आपका cyclopentadienyl anion आपका aromatic है. Okay. So this is aromatic and very stable, and these two are the non-aromatic because they does not follow the Huckel's rule. They does not give you the magic numbers. So that's why they are anti-aromatic and they are unstable in nature. This is not that much. Similarly, this is cycloheptatrienyl cation. ये आपका यहाँ पे इस फॉर्म में है तो that means यहाँ पे आपका 6 electrons है. So it is your magic number, showing magic number. So that means it is a aromatic, stable. This is a radical. So यहाँ पे 7 electrons हो गया, which is not a magic number. यहाँ पे आपका 8 electrons हो गया, pi electrons. So again that is not a magic number. That means these two structures, radical as well as anion, does not follow Huckel's rule, but cation follow the Huckel's rule. That's why it is a aromatic compound and highly stable. So this is aromatic and stable, and these two are non-aromatic, unstable. Okay, so students, we have finished with this topic, and in next lecture from Monday onwards we will start with the water chapter, which is a very big chapter containing numerical as well as theory. So from Monday we will start that topic. So we have finished with that. Let me take the attendance. आपका कब था लेक्चर डी डिवीजन का? वेडनेसडे. नोट्स नहीं रहेंगे तो क्या हुआ बेटा?
मैम नोट्स नोट्स मैं भेज देती हूँ आपको व्हाट्सएप पे, इस पे ही डालती हूँ व्हाट्सएप पे जब तक, ठीक है? ये ओके चैप्टर मैम। का नोट्स भेज देती हूँ। अच्छा हाँ, मैम, इसको मैंने नोटबुक रेमेडी बनाने का इसकी है। हाँ नोटबुक बनानी है। अभी तो इसका कुछ मैंने दिया नहीं आपको नोट ये करने के लिए होमवर्क, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में मैं दूंगी। तो एक नोटबुक आप रखो ना बेटा सेपरेट, उसमें आप Okay, ma'am. केमिस्ट्री का जो भी मिलेगा वो Okay, ma'am. लिखना। ओके मैंने Okay. आज का रेमेडियल लेक्चर नहीं लिया है, मैंने आपका आज केमिस्ट्री का एक थियरी लेक्चर लिया, क्योंकि रेमेडियल तो तब लेंगे जब हम लोग एक Full. टेस्ट के बाद हमको मार्क्स मिल जाएगा तब हम रेमेडियल लेंगे, यस मैम। ठीक है? Okay, इसलिए मैंने उसको थियरी ले लिया है। ओके प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड मैं एक मिनट शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। ओके गिव योर अटेंडेंस। इलेक्ट्रिकल 1 Present, शेख हुमेरा, ma'am. Present. 2 असद मुख्तार। प्रेजेंट शो योर मैम। फेसेस, शो योर फेसेस बेटा। क्या ये सोफे पे बैठने वो नहीं, आपका फेस दिखाओ। हाँ ओके गुड। इलेक्ट्रिकल 3 खालिद इस्माइल, खालिद इस्माइल नहीं है, एब्सेंट। इलेक्ट्रिकल 4 खान मसूद, एब्सेंट। इलेक्ट्रिकल 5 खान तौसीफ, प्रेजेंट मैम। यस प्रेजेंट। 6 मोहम्मद फुरकान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। 7 साकिब रजा, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। 8 शेख इरफान, शेख इरफान एब्सेंट। 9 शेख सैफ, सैफ है नहीं है, एब्सेंट। इलेक्ट्रिकल 10 शिरसात राजदीप नहीं है। इलेक्ट्रिकल 11 तांबे मोहम्मद अरशद, एब्सेंट। इलेक्ट्रिकल 12 तोले राहिल। सारे इलेक्ट्रिकल वाले एब्सेंट है क्या? इलेक्ट्रिकल 13 उल्दे Present, मुजम्मिल, ma'am. प्रेजेंट। ओके मैकेनिकल 1 पेशिमाम अंजार, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। 2 खान मोहम्मद राशिद, मैकेनिकल 2 एब्सेंट। मैकेनिकल 3 सारिम खान, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैकेनिकल 4 सारिम बेटा आपने 2 लेक्चर पहले का क्यों नहीं अटेंड किया? मैम फीवर से मैम फीवर सफर कर रहा फीवर था हूँ, अभी भी है। तो लेक्चर तो सुन सकते थे ना, मैं तो फीवर में लेक्चर भी ले रही हूँ, आपको तो सिर्फ इसमें सुनना था। और इलेक्ट्रिकल 6 भी फुरकान आपने भी पहले दोनों लेक्चर क्यों नहीं अटेंड किए? हाँ हेलो मैम, यहाँ पर था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था। बाहर गए थे Yes, ma'am. तो ऑनलाइन है ना बेटा, ज्वाइन तो कर सकते थे। ओके मैकेनिकल Yes, ma'am. 4 फारिस रिजवान, प्रेजेंट मैम। फारिस रिजवान प्रेजेंट। यस प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट। मैकेनिकल 5 शेख मोहम्मद महबूब, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैकेनिकल 6 नादालिया मुसब, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैकेनिकल 7 अबू शामा, अबू शामा एब्सेंट। मैकेनिकल 8 खान अशर, ये तो अभी तक आया ही नहीं एक बार भी। मैकेनिकल 9 विश्वकर्मा सुशील, वो भी नहीं है। मैकेनिकल 10 काजी सय्यम, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। 11 सही बोले नाजिम, प्रेजेंट मैम। नाजिम प्रेजेंट है मैम। ना? हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट, यस मैम। हाँ प्रेजेंट बेटा। मैकेनिकल 12 सलमान अशरफ, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। मैकेनिकल 13 अंसारी मोहम्मद अरसलान,
एब्सेंट। मैकेनिकल 14 पाटिल सोहम प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। प्रेजेंट। ओके ओके चलो थैंक यू। नाउ यू ऑल कैन लीव। आई एम एंडिंग द क्लास। मैम नोट्स भेज के दो। हाँ नोट नोट्स भेजती हूँ अभी आज। हाँ भेजती हूँ बेटा ठीक है। मैम इलेक्ट्रिकल 11 ने मैसेज किया है कि वो प्रेजेंट वो है, present बाबूचंद है, से मैम। म्यूट किए थे। कौन इलेक्ट्रिकल 11? अम्बे मोहम्मद अरशद। हाँ हाँ 11 मैम उसका प्रेजेंट। मैसेज कहाँ है। थे बेटा? मैं बुला रही तो मैम वो बोलता है आपने म्यूट किए थे मुझे। है। मैंने किसी को भी म्यूट नहीं किया है। ठीक है चलो प्रेजेंट लगा रही हूँ मैं। और अरशद बेटा आप थे क्यों नहीं 2 लेक्चर पहले? अनम्यूट करो अभी। 11 इलेक्ट्रिकल 11 उसका नेटवर्क इशू है। वो बोल रहा है कि मैंने उसको म्यूट किया। माइक चालू नहीं हो रहा है। ओके पहला 2 लेक्चर आपने मिस किया है। अभी डेली रेगुलर रहना है ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज बाय बाय।